अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है एक न्यू क्लास में जिसमें आज हम सीखेंगे 80 सेंटेंसेस जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश के वो सेंटेंसेस जो बहुत आसान हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जा सकते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस किया करें क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से आपकी जो लैंग्वेज बहुत अच्छी डेवलप होगी और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आर यू कमिंग टुमारो। सेकंड सेंटेंस है, बी क्वाइट। थर्ड सेंटेंस है, कैन यू फिक्स दिस। फोर्थ वन है, डू यू हैव अ फ्रेंड। डू यू नीड एनीथिंग। हम इन्हें रिपीट करेंगे। आर यू कमिंग टुमारो, बी क्वाइट, कैन यू फिक्स दिस, डू यू हैव अ फ्रेंड, डू यू नीड एनीथिंग। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। आर यू कंफर्टेबल, बी केयरफुल, कैन यू डू मी अ फेवर, डू यू गो टू लाहौर, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। हम इन्हें दोबारा रिपीट करेंगे। आर यू कंफर्टेबल, बी केयरफुल, कैन यू डू मी अ फेवर, डू यू गो टू लाहौर, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। तो चलिए चेक करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है, व्हाट इज़ इन इट, व्हेन आर यू गोइंग, वेयर कैन आई एक्सचेंज करेंसी, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक। इसमें सारे क्वेश्चन किए गए हैं दूसरे से, तो दोबारा हम इन्हें रिपीट करेंगे। व्हाट इज़ इन इट, व्हेन आर यू गोइंग, वेयर कैन आई एक्सचेंज करेंसी, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास, एवरी डे आई गेट अप एट 5 AM। हैव यू बीन टू कराची, हियर यू आर, हाउ डज इट टेस्ट, आई हैव अ हेडेक। हम इन सेंटेंसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। एवरी डे आई गेट अप एट 5 AM। हैव यू बीन टू कराची, हियर यू आर, हाउ डज इट टेस्ट, आई हैव हेडेक। तो फ्रेंड्स, आप डेली इनको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, जो जो सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो इस स्लाइड में है हमारे लिए, दे विल रिटर्न नाउ, गिव मी 1 glass of water, what are you going to do tomorrow, what does this word mean, what is the meaning of this word। हम दोबारा इन्हें रिपीट करते हैं। They will return now, give me 1 glass of water, what are you going to do tomorrow, what does this word mean, what is the meaning of this word। तो चलिए चेक करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास, आई नीड टू प्रैक्टिस माई लेसन, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई वुड लाइक टू गो इस्लामाबाद, आई एम 23। यानी आप अपनी एज अगर बताना चाहें तो इस तरह आप किसी को बता सकते हैं कि आई एम 23, या जितनी आपकी एज है। आई एम मैरिड, तो इन्हें दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। आई नीड टू प्रैक्टिस माई लेसन,
I want to show you something. I would like to go Islamabad. I am 23. I am married. तो नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं. I am not married. Is it close? Is this bus to Lahore? Just a little. My name is Ali. इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं और कुछ वैसे सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो हम दोबारा रिपीट करते हैं. I am not married. Is it close? Is this bus to Lahore? Just a little. My name is Ali. Is it close के आगे भी क्वेश्चन मार्क आना था क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है. सो नेक्स्ट स्लाइड हम चेक करते हैं. It will arrive shortly. It's over there. It's too late. More than 50 miles. No, it's okay, thanks. तो फ्रेंड्स इन सेंटेंसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे. It will arrive shortly. It's over there. It's too late. More than 50 miles. No, it's okay, thanks. तो ये भी आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं. On the right. Please write it down. That's not fair. Take this medicine. There are many people here. इन सेंटेंसेस को हम दोबारा रिपीट करते हैं. On the right. Please write it down. That's not fair. Take the medicine. Take this medicine. There are many people here. तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इनको प्रैक्टिस किया करें हमारे साथ साथ. नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं. तो इस स्लाइड में है हमारे पास आई एम कमिंग टू पिक यू अप. आई एम गोइंग टू दुबई नेक्स्ट ईयर. आई एम सिक. नीड एनीथिंग एल्स. इज़ डैट इनफ. इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि थोड़े एडवांस लेवल के भी हैं, तो उन्हें भी आप प्रैक्टिस करने की ट्राई करें. इन्हें अब हम दोबारा रिपीट करेंगे. आई एम कमिंग टू पिक यू अप. आई एम गोइंग टू दुबई नेक्स्ट ईयर. आई एम सिक. नीड एनीथिंग एल्स. इज़ डैट इनफ. तो फ्रेंड्स चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कैसे सेंटेंसेस हैं. ट्राई इट ऑन. व्हाट डू यू डू फॉर वर्क. व्हाट टाइम डिड यू गो टू स्लीप. व्हाट्स रॉन्ग. व्हेन इज़ द नेक्स्ट बस टू लाहौर. इन्हें हम दोबारा रिपीट करेंगे. Try it on. What do you do for work? What time did you go to sleep? What's wrong? When is the next bus to Lahore? चलें फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं. I have finished my food. I like desi food. I think it's very good. I would like some more water. I will call you. इन्हें हम दोबारा रिपीट करते हैं. I have finished my food. I like desi food. I think it's very good. I would like some more water. I will call you. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं. Where is my laptop? Distance about 10 kilometers. Are you sure?
Can I have the bill please? Can you read this for me? तो फ्रेंड्स इन्हें दोबारा रिपीट करेंगे हम. Where is my laptop? Distance about 10 kilometers. Are you sure? Can I have the bill please? Can you read this for me? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. He is very annoying. His daughter. How long is it? How tall are you? He do not speak English very well. इन्हें दोबारा हम रिपीट करते हैं. He is very annoying. His daughter. How long is it? How tall are you? He don't speak English very well. तो चलें फ्रेंड्स अब हम अपनी लास्ट स्लाइड चेक करते हैं. इसमें हमारे लिए कौन से सेंटेंसेस हैं. तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में है हमारे पास डू यू हैव एनीथिंग फॉर ईट. डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट्स. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल. फ्रॉम टाइम टू टाइम. ही लाइक्स इट वेरी मच. अब हम इन्हें दोबारा रिपीट करते हैं. डू यू हैव एनीथिंग फॉर ईट. डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल. फ्रॉम टाइम टू टाइम. ही लाइक्स इट वेरी मच. तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास. होपफुली आप इन सेंटेंसेस को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी. तो आप हमारे साथ डेली इनको प्रैक्टिस किया करें. मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.